Hello and very good evening, everyone. I hope everybody's had a peaceful dinner, had good food, is feeling not sleepy but rather, kind of rejuvenated and so on. Because what we are going to be discussing is some of the uh, very popular area of law, particularly when it comes to the law of torts, right? जिसमें in fact something that I definitely want to point out is that in terms of CLAT 2020 also, right? If you look at the past year papers, particularly and uniquely in CLAT 2020 itself, जब पहली बार पूरा pattern change हुआ and all of those things happened in that examination itself, right? In that examination itself, we had an entire passage which specifically was dealing with the issue of strict and absolute liability as well as the polluter pays principle. Right, polluter pays principle also is something that was specifically part of that passage. Hi Soham, very good evening to you. Shambhavi, very good to see you as well. Always good to see some familiar faces so that we can expect some familiar conversations and so on. And to anybody who's going to watch this later on as well, I hope this is very useful. By way of a quick introduction, my name is Debajyoti Das and I'm an alumni of Hidayatullah National Law University. I also secured an All India rank 20 in the NLSIU Bangalore entrance in 2006. I've been a Microsoft Intellectual Property Research Scholar, and after graduation, I have also worked with one of the topmost law firms in India, specializing in their capital markets team that is at the firm called Amarchand and Mangaldas, which is pretty much one of the top law firms in India. You guys can of course join me on Telegram, right? Telegram pe this is the channel, this is the group rather. So you can ask me questions there. You can suggest any topics, that we can go on discussing. So can you please take a session on the ART Amendment Bill 20? Sure, Soham. Maybe once it's a little more concrete, but yeah, okay. I'll try to schedule it. I'll try to schedule something before New Year itself, so that you're all a little more prepared, right? Okay, you can of course use the code DAVE10, guys. Those of you who've been enjoying my sessions, if you're taking up any of the subscriptions, please do remember to use my code to get an additional 10% discount. And as a token of appreciation also कि चलिए आपका class बढ़िया लगता है, that's why we are using your code. Please do remember that we have some very unique features here on the Unacademy platform as far as the Plus platform is concerned, as well as the special classes, which are the free sessions that we conduct. You can ask questions to the educators specifically by raising your hand and by speaking rather than by texting and so on. In a few days time, specifically on the 19th of December, Sunday aane wala hai, right? Sunday ko please do join in, guys. Please do join in. Remember, at 5 p.m. we have the Unacademy All India CLAT mock test, and you can all use the invite code DAVE10 to join in, and you stand a chance. If you're the topper, you will get a chance to win the iPad mini, right? And of course, rank 2 will also get Amazon vouchers worth 10,000 rupees, 5,000 rupees, and 4 to 10 के लिए हम लोग 500 rupees का भी vouchers provide कर रहे हैं. So if you're any one of the top 10, you have some decent prizes on offer. We do have some important batch announcements to make. The Super Achievers batch is going to start off tomorrow, right? कल से शुरू हो रहा है the Super Achievers batch. Hi Aditya, sorry मैं chat box पे ध्यान नहीं दिया था. सर लीगल रीजनिंग पैरा बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कोई अच्छा बुक सजेस्ट करेंगे क्या? Aditya, the mock papers and the past year papers are honestly the best places because नए पैटर्न पे to be very honest कोई बुक्स अच्छे तो आए नहीं है. हाँ, पुराने तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, किसी से भी पूछोगे फ्रॉम
AP भारद्वाज टू पियर्सन एंड सो ऑन, बट वो कोई भी नए पैटर्न पे प्राइमरी फोकस किसी का भी नहीं है. सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट्स, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज आई थिंक द बेस्ट सोर्स of your whole practice as far as preparation for CLAT 2022 है या 2023 है. either ways, right, either ways मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप उसी पे फोकस करें, बिकॉज नए बुक्स एक्सेट्रा रियली हो नहीं रहा है. कोई लिख क्यों नहीं रहा है? वेल, आई मीन इट्स मोस्टली जस्ट अ प्रैक्टिस बुक बनाएंगे तो बनाएंगे, राइट? सो इट्स नॉट रियली राइटिंग अ बुक kind of a situation, right? We do have the success law batch as well, guys, जो थोड़ा 2-3 दिन बाद शुरू हो रहा है. That is on the 17th of December. I hope some of you are going to join me there as well. And of course, in a few days, Saturday evening का हमारा स्पेशल क्लास का जो इवेंट्स होता रहता है, एक ये वाला स्पेशल इवेंट हम लोग कर रहे हैं. दैट इज ऑन द 18th of December, Saturday 6 PM. NLU लखनऊ वर्सेस NLU पटियाला. ऐसा नहीं कि लिटरली वॉर डिक्लेयर हो जाएगा, right? It's just that we have alumni from both these schools who are going to be talking about the various experiences that they went through. They're going to be talking about some of the positives as well as some of the things that may not be the best in their respective schools, ranging from placements and beyond. So I hope a lot of you are going to join in for this particular session. Marathon session to chali raha hai. Yesterday we did the legal marathon. Today, of course, we do have the English marathon as well. Logical reasoning kal hai. Day after tomorrow is the quants marathon up to Friday. So Monday to Friday we have a week-long marathon series that is going on right now. GK and current affairs marathon is going to be the concluding marathon, that is on the 17th. You can also participate in the various educator curated tests जो Tuesday, Thursday और Saturday को होते हैं. तो आज भी इनफैक्ट हुआ था. I don't know if some of you gave it. If not, Thursday को अगला टेस्ट होने वाला है. I hope you're going to join in at 6 PM, followed by the analysis at 6:30 PM, and of course the live quiz feature जो आपको पता ही है वो भी अभी already active है. Okay, now when it comes to strict and absolute liability, right at the very outset, पहली चीज हमें क्या समझनी है कि टॉर्ट लॉ की जब हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ टॉर्ट लॉ इटसेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉर्ट लॉ में क्या होता है, that there is a certain fault, right? किसी ने कुछ गलत किया है, किसी की कोई गलती रही है, and because of one person's fault, because of one person's fault, if another person is suffering some damage or injury or इस टाइप का जो भी है, तो जिसकी गलती थी वो कॉम्पेंसेशन पे करेगा सेकेंड पर्सन को, राइट? देयर आर ओनली 2 एक्सेप्शंस. जब आपकी खुद की गलती नहीं होती है, राइट? जब आपकी खुद की गलती नहीं होती है, एंड इवन विदाउट एनी फॉल्ट, you still have to pay compensation. Okay, so हम क्या पूछ रहे हैं सर, 1000 तक के रैंक में NLU पटियाला मिल जाता है ना? well, थोड़ा सा टच एंड गो है, बट yes, I would say थोड़ा आगे पीछे, but yeah, 1000 में may not be in the first list, but towards the second and third list, there is a decent chance of qualifying Patiala. Chances हैं. Safer would be like a 950 or a 900 rank, right? थोड़ा ज़्यादा safe अगर feel करना है about NLU Patiala, or for that matter NLU Lucknow, थोड़ा सा higher rank लाके ज़्यादा safety, ज़्यादा chances, ज़्यादा probability definitely होता है, right? Okay. Now, दो situation है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, that without any fault also you will be able to get some compensation. कब हो सकता है? पहला तो वाइकेरियस लाइबिलिटी है, जब आपकी गलती नहीं होती है बट आपके सर्वेंट की या आपके एजेंट की या उसमें से किसी की गलती होती है. ओके, आदित्य सर चैनल में क्वांटिटेटिव क्यों नहीं होता है? नहीं हो रहा है क्या आदित्य? आई एक्चुअली डोंट नो.
बट अगर नहीं हो रहा है, आई विल डेफिनेटली पास ऑन योर फीडबैक, बिकॉज वी डेफिनेटली हैव एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट पीपल जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के भी कुछ कुछ सेशंस ले सकते हैं। कोई नहीं लेगा तो माई प्रॉमिस यू, मैं ही कम से कम मैथ्स के आधे चैप्टर्स का तो मैं ही ले सकता हूँ। तो मैं शुरुआत मैं ही कर दूंगा अबाउट नंबर सिस्टम या स्पीड डिस्टेंस टाइम या रेशियो या किसी भी एक चैप्टर से, और फिर कंटिन्यू करेंगे। बट एक बार मुझे चेक करने दो। होता है मयंक सर टेक्स्ट क्लासेस से, देखो सोहम बता तो रहा है कि सेशंस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक बेल आइकॉन और ये सब हिट करने से मे बी मिस नहीं होगा। बट जस्ट जस्ट अ सजेशन है ना। ठीक है, तो एक तो वाइकेरियस लायबिलिटी, आपकी गलती नहीं होती है फिर भी आपको कॉम्पेंसेशन पे करना होता है, बिकॉज यू आर द मास्टर, राइट, और यू आर द principal, and your agent or your servant, whatever, has done something wrong. Okay. Then the other thing is strict and absolute liability. अब इसमें क्या है, even without any fault, उसमें हम basically क्या कह रहे हैं कि without any fault, no fault. Okay. वहां एटलीस्ट समवन else's fault तो था ही ना vicarious liability में, एटलीस्ट vicarious liability में किसी की तो गलती थी, यहां पर without any fault. Okay. क्यों no fault? Because here the liability is not based on fault, it is responsibility. Okay. रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी, बात गलती की नहीं है। ओके, अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो बात गलती की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। ओके, हु इज एट फॉल्ट, दैट्स नॉट द इशू, इट्स नॉट अबाउट फॉल्ट, इट्स अबाउट responsibility, right? Fault versus responsibility. Now of course some things, some circumstances, only certain conditions जब फुलफिल होते हैं, जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी डज नॉट अप्लाई इन ऑल सिचुएशंस रैंडमली, और इस टाइप का नहीं होगा। होगा तो कुछ गलती होगी, कुछ सिचुएशन होगा, कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ कंडीशंस जब फुलफिल होंगे तब हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सर आप इस चैनल में पैरा बेस्ड क्वेश्चंस का भी क्लास लीजिएगा ना प्लीज सर। ओके, डन है आदित्य। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम स्पेशल क्लासेस में भी करेंगे। कल भी इनफैक्ट स्पेशल क्लास एक था जिसमें हम लीगल का मैराथन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सो वी डिड अ फ्यू क्वेश्चंस। बट अगर YouTube चैनल पे नहीं भी हो रहा है तो कम से कम स्पेशल क्लासेस में तो हम प्रैक्टिस और क्वेश्चंस और ये सब करते ही हैं। सो आई होप आप वहां पर भी आके अटेंड कर ही पाओगे, क्योंकि वो भी फ्री ही होता है, इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग द प्लस सेशंस, राइट। ओके, अब किस केस से आता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, राइट। व्हेन डज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई? रैंडमली हर सिचुएशन में। भाई नेग्लिजेंस के केस में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो नहीं अप्लाई करेंगे, तो कब अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में हुआ क्या था कि फ्लेचर की प्रॉपर्टी पे, फ्लेचर की प्रॉपर्टी में देयर आर सर्टेन माइन शाफ्ट्स, देयर आर सर्टेन वो था माइन शाफ्ट्स थे, राइट। अब राइलैंड्स के प्रॉपर्टी पे एक बड़ा सा वाटर रिजर्वॉयर था, देयर वाज अ बिग वाटर रिजर्वॉयर, ह्यूज वाटर रिजर्वॉयर ऑन राइलैंड्स प्रॉपर्टी। फ्लेचर का प्रॉपर्टी उसके बगल में, और उसमें कुछ माइन शाफ्ट्स और ये सब था। वन डे व्हाट हैपेंड इज दैट द वाटर रिजर्वॉयर जो राइलैंड्स की प्रॉपर्टी में था, राइट, one day that water reservoir basically broke down, टूट गया। The water then escaped, सिर्फ रिजर्वॉयर के बाहर नहीं गया, राइलैंड्स के प्रॉपर्टी के भी बाहर चला गया। तो the water flowed outside Ryland's property also. Then the water entered into Fletcher's property, entered into the mine shafts जो फ्लेचर की प्रॉपर्टी पे थे, and the water caused damage to the mine shafts. Okay, so सब कुछ डैमेज हो गया, गलत हो गया, ये सब हो गया।
Now Fletcher filed a case against Rylands saying भाई ये जो हुआ है तुम्हारे वाटर रिजर्वर से पानी आया, ये हुआ, मुझे डैमेज हुआ, तो देन आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। अब यहां से केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज व्हेन राइलैंड्स वेंट टू कोर्ट, राइलैंड्स का आर्ग्यूमेंट काफी सिंपल था। राइलैंड्स ने कोर्ट में जाके क्या बोला? राइलैंड्स ने कहा भाई वाटर रिजर्वर टूटा तो है, नो डाउट, ऑब्वियसली इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टूटा तो है, बट द रिजर्वॉयर डिड नॉट ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट ऑन माई पार्ट। तो उसका आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल है, वो कह रहा है मेरी गलती नहीं है, दैट्स एसेंशियली व्हाट इज सेइंग कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है तो मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं पे करना है। अगेन द आर्ग्यूमेंट इज सिंपल एंड द आर्ग्यूमेंट इज क्लीन, बट फॉर द फर्स्ट टाइम, for the first time, the court, the House of Lords also finally, इंग्लैंड में पहली बार कोर्ट ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि रिजर्वायर तुम्हारी गलती से नहीं टूटा है, it does not matter that there is no fault on your part, because the whole concept of strict liability, strict liability में आपकी गलती है या नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। आपके घर पे अगर कोई डेंजरस चीज था, आपके प्रॉपर्टी पे अगर कोई डेंजरस चीज था, and that dangerous thing is ultimately escaping, right? That dangerous thing is ultimately escaping, तो गलती थी या नहीं थी वो इशू नहीं है, इशू ये है दैट अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ओके, गलती की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। और कौन जिम्मेदारी ले? भाई आपके प्रॉपर्टी पे डेंजरस थिंग था, आप ही की प्रॉपर्टी से डेंजरस थिंग एस्केप किया, मेरी प्रॉपर्टी में आके डैमेज कर रहा है, सो ऑब्वियसली nobody else can be held responsible, you have to be held responsible. So what are these conditions? क्या बेसिकली कंडीशन हो रहा है? there must be a dangerous thing. Okay, now the question is water, is water a dangerous thing? दोनों में डेंजरस थिंग की बात हो रही है ना। Is water a dangerous thing? In small quantities, हल्की हल्की बारिश हो रही है अगर, right? There's mild rain and stuff like that is happening. Obviously, mild rainfall does not make something to be dangerous. That water is not dangerous. हाँ, but अगर ऐसा हो कि भाई सुपर साइक्लोन आ गया है, सुनामी आ गया है, फ्लड आ गया है, इट इज द सेम वाटर, राइट? जो आप ग्लास में पीते हैं, पीने के लिए, जीने के लिए पानी चाहिए, राइट? बट सुनामी आ जाए तो नाउ दैट इज द काइंड ऑफ वाटर विच, सो वाटर इन स्मॉल क्वांटिटीज may not be a dangerous thing, but even water, when we talk about it in the context of a huge change, a huge impact, और इस टाइप की अगर बात हो रही है, तो water also can be a very very dangerous thing, right? So dangerous thing must be for non-natural use. Non-natural use, भाई अगर आप किसी घर पे रह रहे हैं तो नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए एक बेसिक अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए। तो सबके घर पे, आपके घर पे भी ऊपर एक टंकी लगी हुई है, राइट? there's a small container of water, small reservoir of water. If you're staying in an apartment, there's a bigger, because सबके घर में पानी जाना है and so on. So there is a requirement of water, that's fine. But do you need a huge
water reservoir, then the answer is no. Okay, अलग से अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है कि एक ह्यूज वाटर रिजर्वायर मुझे अलग से चाहिए होगा, नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं चाहिए, राइट? ह्यूज वाटर रिजर्वायर इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हिच मींस कि अगर किसी के नॉर्मल प्रॉपर्टी में एक उस टाइप का रिजर्वायर है जैसा रायलैंड्स के घर पे था, then it is assumed to be non-natural use, right? We will assume that this is a non-natural use, and of course this dangerous thing has escaped, right? Dangerous thing का escape तो हुआ ही है यहाँ पर, definitely there is escape of the dangerous thing, and it is this escape which has ultimately caused the damage, right? Such escape must cause, so ultimately causality, escape हुआ, जैसे हम negligence में भी causality का test है, right? Causal nexus, we call it causal nexus, causality और causal nexus, ये सारी चीजें काफी डिटेल में जब हम टॉट का लेक्चर्स इन द प्लस क्लासेस करते हैं या स्पेशल क्लासेस में, यूट्यूब में इससे ज्यादा डिटेल का मैं टाइम लेता नहीं हूँ, आई ट्राई टू कीप इट at under 30 minutes as far as the YouTube sessions are concerned, but special classes, right? Special class is at least 45 minutes, right? Special classes minimum 45 minutes का मैं लेता हूँ, right? And the plus classes तो मेरा 1.5 hours का होता है, so I get a lot more time, right? I get a lot more time to be ultimately to be able to kind of discuss all of these concepts, all of these philosophies in a little more detail, right? In a little more detail. तो इसीलिए इस टाइप की कोई भी चीज अगर आपको और डिटेल में समझना हो या कुछ हो, the best place to reach out to me is either the plus classes or in the special classes, right? But anyway, causal nexus, it's a concept in negligence as well, कि कोई अगर negligent action मैं कर रहा हूँ, then there must be a connection between my negligence, right? There must be a connection between my negligence and ultimately the damage that another person is suffering. So if there is no connection between the negligence and the damage, obviously there is no liability that I am going to have as far as that particular negligence is concerned, right? कि मैंने negligently गाड़ी चलाया, आपको एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो डॉक्टर था वो अलग से गलती करके गलत एनेस्थेसिया देके आपकी जान चली गई, राइट? नाउ whoever is filing the case, उसको ये साबित करना पड़ेगा ना कि मैं जो गाड़ी चला रहा था नेग्लिजेंटली, उसकी वजह से आपका डेथ हुआ है। वो कभी प्रूव हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें तो जो भी नॉर्मल एक्सीडेंट होना था वो हुआ था, राइट? विच इज अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम, बट उस प्रॉब्लम की वजह से डेथ नहीं हुआ है। डेथ हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट negligence of the doctor and anesthesiologist or whatever at the hospital, so that is not my fault, right? So similarly यहाँ पर थिंग escape हुआ है, उस escape की वजह से damage must have happened, that is something which needs to be proved, which needs to be established, तब जाके strict liability में आएगा, right? Okay, why is the defendant's name first? राइलैंड्स के अगेंस्ट फ्लेचर इज फाइलिंग द केस, फ्लेचर के प्रॉपर्टी में वाटर चला गया, राइलैंड्स का रिजर्वायर था, व्हाई इज द डिफेंडेंट्स नेम फर्स्ट? ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान दिया कोई? द आंसर विल बी फाउंड tomorrow at 10:30 p.m. Tomorrow at 10:30 p.m. we will have a special class for various Q&A topics, right? कुछ questions हम practice भी करेंगे, कुछ strict liability and basic concept of tort law भी हम discuss करेंगे। Tomorrow 10:30 p.m. special class है। इसका भी अगर आपको आंसर जानना हो, the best place, डिफेंडेंट का नाम पहले क्यों है, this is also something that I will be addressing, and I will be continuing with absolute liability, right? Absolute liability
के साथ हम कंटिन्यू करेंगे इन टुमारोज स्पेशल क्लास at 10:30 p.m. So I hope to see some of you in that particular class. Just to give you a quick glimpse, right? अगर आपको समझना हो कि क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मेनली पेट्रियटिज्म का तो क्या फैक्टर है वो मैं बताऊंगा ही. पेट्रियटिज्म का इसलिए बिकॉज इट्स एन इंडियन केस, राइट? मोस्ट ऑफ टॉर्ट लॉज जब भी हम पढ़ते रहते हैं, कोई ब्रिटिश का ही केस होता है, कहीं और का केस होता है, बट डेंजरस चीज होता है दिस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अल्ट्रा हैजर्डस थिंग दिस इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ये जो नो डिफेंसेस वाली बात है वो सिर्फ एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे है, राइट? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देयर आर सम डिफेंसेस, राइट? तो ये जो फैक्टर्स ने, ये जो आखिरी वाले फैक्टर्स है, दिस इज समथिंग that I will be discussing with all of you tomorrow evening. Once again, let me remind you, tomorrow at 10:30 p.m. okay, कल शाम को इस पे हम डिस्कशन को कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे. एग्जैक्ट लिंक वगैरह अगर आपको चाहिए, कोड तो आप यूज करेंगे ही, बट यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट लिंक ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, right? Just to take you through a quick reminder, if you guys want to take a look at the telegram ka group jo hai, this is the link to the telegram group, guys. This is the link to the telegram group. अगर कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन मी देयर. आपको एग्जैक्ट क्लास का लिंक भी मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा सुबह सुबह. एंड टुमारो एट 10:30 p.m. we will meet for a continuing discussion on strict and absolute liability. Right, in the meanwhile guys, have a lovely evening. कल सुबह भी फिर से मुलाकात होगी. Tomorrow morning also we have another YouTube session and tomorrow evening also another YouTube session, but most importantly ये वाला जो special class है उसमें भी आप सबसे मेरी मुलाकात होगी. Okay guys, bye bye, have a great night, very good night to all of you.